Today's topic is an intelligent pig. Pig actually stands for pipeline investigation gauge or gauges. So by calling it as intelligent, what we are trying to do is we are trying to perform a damage in service damage assessment on that part. In service, during the service, we need to understand, we need to identify if any sort of damage has occurred or there is a possibility of such occurrence. For that we require this pig. Now what are these damages? First of all, what do you mean by a pipeline? Pipeline means a metal body having irregular shape. Metal body और उसका irregular बोलना गलत होगा. It has got a curvy shape. Usually it can be a straight or occasionally can have shaped curves. Essentially, E-walaji curves. Now, what do they contain? They contain, it can contain a lot of things. They can contain oil, or fuel, mainly oil and fuel. So, as the oil and fuel, it passes through these pipes, right? Especially at the curved regions, there is a possibility of corrosion, possibility of damage, and if a mechanical aspect is also involved, there can be a fatigue. If repeated cyclic stress is involved, and there can be thinning of the walls. Walls thinning. तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. और corrosion, वैसे corrosion तुम देखोगे कि there are 8 forms of corrosion. There is pitting corrosion, there is corrosion. कितने forms हैं? देखिए, the normal oxidation, there is galvanic corrosion, there is something called hydrogen embrittlement, there is pitting corrosion, SCC, this is most important in this case, stress corrosion cracking, 1, 2, 3, 4, 5, और भी कुछ बहुत सारे हैं, but these are the main. Crevice corrosion, और कुछ. वैसे तो बोलते 8 हैं, लेकिन there can be combination of lot of things. तो ये जो different types of corrosion है in the case of pipelines, खास करके जो curved regions है, because in these curved regions the fluid velocity increases, and so these are vulnerable to different failure. अच्छा, अगर if it is under stress and there is a corrosion, it can cause SCC. Stress corrosion can be chemical as well as mechanical effect.
Okay. So for these in-service condition damage assessment, we take the help of electromagnetism. And then this pig comes into it. Electromagnetism. So when we say electromagnetism, inevitably the root of this is in the four Maxwell's laws. Maxwell के चार law हैं. इनका रूट है. याद है वो चार क्या लॉ है? दो डॉट प्रोडक्ट, दो क्रॉस प्रोडक्ट. ये सबसे आसान मैग्नेटिक monopoles do not exist. Process law of electricity, charge density. This is Faraday's law. यहाँ पर especially in this case we will be using this one and to some extent this one. Second and fourth वाला यहाँ पे ज़्यादा यूज होगा. Second वाला क्या बोल रहा है? The magnetic lines of force, monopoles do not exist. और फोर्थ वाला क्या बोल रहा है कि the magnetic field is there is an AC magnetic field is opposite the magnetic field. This gives rise to the magnetic. ये जो current which is arising due to the alternating change in the alternating magnetic field, इस current का नाम है eddy currents. Eddy. So whenever a sample, I will take this one as a sample. The next. Whenever there is a sample, normal कोई sample है और उसमें somehow by using we are creating some magnetic field. तो इन magnetic fields के बीच ऐसे करके eddy currents develop होगा. Eddy currents. और we keep track of the eddy currents. So जैसे कोई ट्रैक यहाँ पर डेवलप हुआ है एज एन ट्रैक, so automatically there will be a discontinuous signal of that eddy current. So you can detect यहाँ पे discontinuity है. There is one more aspect to this, is that depth. Up to which depth we can rely on. So since we are using an alternating magnetic field, B is not is alternating. So यहाँ पे जो current arises J, this is the eddy current density. Current density. And is related to electric field as, okay, these are electric field. Power loss due to joule heating, जैसे करंट जाएगा तो हीटिंग होगा. पावर लॉस कितना होता है? I square R, J square ठीक है. P J square R. Okay. Now this R is not. यहाँ पे actually problem है. जो R है. Since we are using an alternating field, this R is not only R,
जियोमेगा। ये कहाँ से आ रहा है? जियोमेगा है। This is the impedance from the ये R यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से R एंड तो हम लोग जो प्रोब यूज करते हैं ना, एडी करंट प्रोब, सपोज कोई पाइप है, पाइप में तो इस तरह का मशीन हम लोग लेके जा नहीं सकते। वी शैल बी रिक्वायरिंग एन एडी करंट प्रोब जी, जो हम ले जा सके पाइप के अंदर। सो दैट प्रोब एक्चुअली लुक्स समथिंग लाइक दिस। This is your L और ये जो वायर है this is has got this R, यहाँ से उसको, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी इज इम्पोर्टेंट। Why is it important? I am telling you. यहाँ पे और एक पैरामीटर इन द केस ऑफ एडी करंट टेस्ट, इसको एडी करंट टेस्ट बोलता है, एडी करंट टेस्ट और ECT, एडी करंट टेस्ट। One more aspect of an eddy current test for ND is called skin depth. Skin depth, मतलब कितना डेप्थ तक it can identify. And the skin depth delta density by permeability into omega frequency. So whenever I will be supplying the current, when we will take current, so उसका जो frequency है, sorry, when there will be magnetic field, उसका जो frequency है, frequency जितना कम होगा, frequency that it is inversely proportional to delta. I can write it in this fashion: omega is inversely proportional to delta square. इसका मतलब है मैं जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दूंगा उतना मेरा शैलो डेप्थ सरफेस से मुझे सिग्नल मिलेगा, मैं कम फ्रीक्वेंसी दूंगा उतना मुझे डीप से। तो इसी के ऊपर बेस करके देयर हैज़ बीन डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दिस ECT। एक को जैसे बोलते हैं पल्स ECT, Pulse is when we require a transient response. मतलब ऐसा कोई response जो कि हो रहा है तो रोकेट वापस transient। Because ये जो पीक का इस्तेमाल ये बहुत सारे केसेस में हो सकता है, जैसे कि सबसे जो डायनामिक एग्जाम्पल इन प्रेजेंट टाइम इज fuel siege। फिर से जो उसका पाइपलाइन फॉर सप्लाइंग द फ्यूल होगा, उसमें दिस पल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और जो इस्तेमाल हो सकता है इस ऑफशोर, इन द सी, यहाँ पर हो सकता है। Then it can be in the nuclear reactors, इन सारी जगहों पे इसके इस्तेमाल हो सकता है। Now the question is it always that we are putting the probe, this sort of probe inside, और उसको बाहर लेके आते हैं and we get the signal? The answer is no. We need to do some different activities, जैसे कि